मई जून 2016 वेरिएंट 22 हम स्टार्ट करने लगे हैं और उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे आज पूरा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोग पॉइंट्स में थोड़ी बहुत चीज़ें कर लें डिस्कस, ताकि हम पूरा केस एक क्लास में डिस्कस कर सकें। और स्पेशली आज मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम सी और डी को एक दफ़ा प्रॉपरली अटेम्प्ट करें, ताकि हमें क्लियर हो कि अब उसको अटेम्प्ट करना कैसे। आई एम श्योर दैट नाउ वी आर वेरी क्लियर विद द स्ट्रक्चर। अभी भी आज भी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अब हमें स्ट्रक्चर बिल्कुल लॉक होना चाहिए। पेपर 2 कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 का एक केस। MS is a private limited company that manufactures shoes. शूज बनाते हैं। It uses labor intensive production methods in its two factories. ठीक है, दो फैक्ट्रीज हैं हमारे पास, और दो फैक्ट्रीज में हम लोग लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करते हैं। MS is a family owned and operated company. MS has been trading for 20 years. It has grown significantly over the last 10 years, almost doubling production during that period. ठीक है. The family has recently rejected an offer to sell the business to a large multinational shoe manufacturer. MS produces and sells a range of shoes that is sold in both business markets and consumer markets. ठीक है, हम लोग बिजनेस मार्केट में भी बेचते हैं अपने शूज़, और कंज्यूमर यानी कि हम लोग बिजनेस कस्टमर्स को भी टारगेट करते हैं। लेट्स से जो इंडस्ट्रियल शूज़ होते हैं या फैक्ट्री के कोई शूज़ होते हैं, तो उस तरह के शूज़ में भी हम डील करते हैं, और कंज्यूमर मार्केट्स फाइनल कंज्यूमर्स में भी हम डील करते हैं। MS is facing significant challenges. Katrina, the managing director, has been examining the following information. Revenue 1.92 millions, 1.56, and 2015 का revenue मुझे नहीं दिया हुआ। Average price per pair of shoes $16, $12 and $10. ओवरऑल जो प्राइस है, देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो प्राइस है वो कम होती हुई नज़र आ रही है हमें। और प्रोडक्शन 120,000 की प्रोडक्शन थी, देन 130 एंड देन 140,000, ठीक है। प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जा रही है, और सेल्स हमारी कम हो रही हैं। फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री 2013 और 14 में तो नहीं थी, लेकिन 2015 में इन्वेंट्री बची है हमारे पास $20,000 की। लेबर प्रोडक्टिविटी देखो 4,000, 3,700 एंड 3,500। लेबर प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। Katrina knows that MS is not competitive as unit costs are too high. Labor turnover has been rising. Training is not as effective as it should be. Most competitors use capital intensive production methods. Katrina is considering a proposal that could help secure the long term future of MS. This would be to enter into a joint venture to open a new factory to manufacture shoes. Okay. कोई joint venture scene है. This will require investment in capital equipment costing $5 million. There will be redundancies in the existing factory. ठीक है, redundancies होंगी अच्छी खासी। और पार्ट A1 define the term redundancies। ठीक है, बल्कि 2 मिनट रुक जाते हैं, ज़रा हम इसके एप्लीकेशन पॉइंट्स देख लेते हैं। ज़रा आप लोग भी लिखे मेरे साथ कहीं ना कहीं की एप्लीकेशंस क्या क्या मेन इसकी बातें। एक तो ये कि operating since 20 years. It's a private limited company. और बताओ, और क्या क्या मेन एप्लीकेशंस हैं। टू फैक्ट्रीज, डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज, और लेबर इंटेंसिव, गुड, फैमिली ओन्ड, सेवरल कंपैटिटर्स लिखा हुआ, सेवरल कंपैटिटर्स। हाँ मतलब competitive position, not they're not competitive, yes, right. uh, labor turnover is increasing, yes, not very competitive। और joint venture arrangement चल रहा है, good point,
जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट चल रहा है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है इनकी, ठीक है, सारे हालात सामने आ गए और वो सारे पॉइंट्स मेरे सामने आ गए। इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं 5 million, गुड, यस, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती कम होती जा रही है लिखा हुआ है, हम इतना ट्रेन नहीं करते और प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है, यस, गुड पॉइंट, ठीक है। बिजनेस और कंज्यूमर मार्केट को टारगेट करते हैं, यस, ठीक है। पार्ट A1, डिफाइन द टर्म redundancies, define the term redundancies। रिडंडेंसीज क्या होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती, यही होता है ना, when the employees are asked to leave because they are no longer needed in an organization। और जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे होगे, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, रट्टा चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें तो। और रिडंडेंसी की डेफिनेशन के अंदर आप employees are asked to leave when they are no longer needed। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो, सच एज ड्यू टू, इट कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। अगर बिहेवियर की वजह से निकाल रहे हो तो उसको डिसमिसल कहते हैं, रिडंडेंसी नहीं कहते, ठीक है। रिडंडेंसी तब होती है जैसे अगर आप इकोनॉमिक रिसेशन, जैसे भी कोविड में जो है वो बहुत सारे लोगों को रिडंडेंट किया गया, ठीक है। Weak financial position, new competitors, there can be a lot of reasons, automation, shifting abroad, good reasons, yes, perfect, ठीक है। Next question is, briefly explain the term joint venture। Yes, you can start like this, बिल्कुल। joint venture क्या होता है? This is if two or more businesses agree to work together, this is when two or more businesses agree to work together for a new project। This can be for a certain time। मैं तो खैर अभी पॉइंट्स में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो प्रॉपर इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, हाँ, ठीक है। दिस कैन बी फॉर अ सर्टेन टाइम और फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, और फॉर अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बोथ द वेंचर्स, ये बोथ द पार्टीज will pool in their resources and finance into this project। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके अगर काम करने का डिसीजन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर। एंड वैसे तो खैर आंसर्स एग्जाम में आप लोग इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखेंगे, यू विल नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स ऑब्वियसली। ये तो अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं तो हम पॉइंटर्स कर रहे हैं, वरना एग्जाम में आप लोग इसको एज अ प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट 1, रेफर टू टेबल 2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था हमारे पास? एक्स है रेवेन्यू, रेवेन्यू निकालना है ना। तो पर यूनिट हम प्राइस चार्ज करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं $10,
और कितनी प्रोडक्शन करी हमने? 140,000 ना। प्रोडक्शन की है हमने 140,000 और इन्वेंट्री बची है कुछ। इन्वेंट्री बची है हमारे पास 20,000। तो कितने यूनिट्स हमने बेच दिए होंगे जब हमने 140,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 20,000 की इन्वेंट्री बची है अब हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि हमने 1,20,000 यूनिट जो है वो सेल कर दिए होंगे, है ना। और एक यूनिट की प्राइस कितनी है? $10। जब एक यूनिट की प्राइस है $10 और 1,20,000 शूज़ बेचे हैं, तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा दैट विल बी सेल्स, या मेरा जो रेवेन्यू हो जाएगा दैट विल बी $1.2 million। ठीक है, $1.2 million इज द टोटल रेवेन्यू। वन, इसको हम $1.2 million, ठीक है। खैर यहाँ पे अगर आप केस के ऊपर कुछ लिख रहे हो तो उसके मार्क्स नहीं है, आपको अलग से अपनी वर्किंग्स यहाँ पे शो करनी पड़ेंगी, ठीक है। Okay, so let's go to next part, B part 2. B part 1 हो गया ना। B part 2, explain the likely impact on MS of the fall in the average price of shoes. Explain the likely impact on MS of the fall in the average price of uh, shoes. अगर प्राइस कम हो जाती है तो शूज या एमएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन प्राइस? प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी कम हो सकते हैं वैसे तो। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी यस एक हो सकता है कि सस्ता में भी अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, गुड पॉइंट, ठीक है। ओवरऑल सेल बढ़ने के चांसेस होने चाहिए थे लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ही आ रहा है खैर यहाँ पे तो। आई थिंक अगर प्राइस कम हो जाती है, if the average price is decreasing over the period of time, then the profit margins will reduce for MS. Profit margins will reduce for MS, है ना। देखो अगर प्राइस कम हो जाती है, एक्सप्लेन द लाइकली इम्पैक्ट ऑन एमएस ऑफ द फॉल इन द एवरेज प्राइस ऑफ शूज। तो अगर प्राइस कम हो जाती है तो प्रॉबली हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी कॉस्ट को या हम अपने खर्चों को इतनी आसानी से कवर अप नहीं कर सकेंगे, तो प्रॉबली मसला तो होगा, है ना। दिस इज बिकॉज if less price is charged for shoes, then it will become difficult to cover up for the cost of to cover up for the cost of production, खर्चे कवर करना मुश्किल हो जाएगा, a fall in overall leading to a fall in overall profits. This can
decrease, yeah, this can weaken the financial position of the business. This can weaken the financial position of the business, and it can be seen that MS, और एक दफ़ा हमें लिंक भी करना होता है ना बी पार्ट में, yes, it can be seen that MS is planning, का क्या प्लान कर रहे थे ये लोग, प्लान क्या कर रहे थे एक्सपेंशन का, कैपिटल इक्विपमेंट ना, जॉइंट वेंचर, that MS is planning to have a joint venture and it wants $5 million as an investment, and due to this decrease in margins and the profits, the internal finance may get limited for the business, क्योंकि आप कि प्रॉफिट मार्जिन्स कम होंगे और ओवरऑल अगर प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं तो प्रॉबली हो सकता है कि आपके पास इतने प्रॉफिट्स ना हो कि आप अपना ये जो प्लान है उसको फंड आसानी से कर सको ना। ठीक है, तो आप देखो किसी ना किसी तरह एक दफ़ा लिंक ज़रूर करते हो। वैसे तो हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते, अदर साइड भी लिख सकते थे बिल्कुल, कि यार अगर प्राइस कम होती है तो शायद कुछ कस्टमर्स मे बी ज़्यादा भी आ जाएंगे और ओवरऑल सेल्स बढ़ भी सकती है। लेकिन अब मैंने कोई एक इम्पैक्ट लिखना है, मैंने एक साइड लिख दी। अगर हम दूसरी साइड लिख देते दैट वुड हैव बीन फाइन टू, एंड एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ये न्यू कस्टमर्स could also have been the point। ठीक है, वो भी एक पॉइंट लिख सकते थे कि प्राइस कम होने की वजह से शायद हमारे पास नए कस्टमर्स भी आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर कोई भी एंगल चूज कर लिया, उसके ऊपर तरीके से बात करी एंड देन एप्लीकेशन दिया, दैट वुड बी सफिशिएंट। यस, यू कैन आल्सो राइट बोथ ऑफ देम, बट क्योंकि एक इम्पैक्ट पूछा है, द लाइकली इम्पैक्ट, तो एक साइड बताना इज इट्स फाइन। ठीक है, इसमें पैराग्राफिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर बी पार्ट 2 जो 3 मार्क और 4 मार्क होता है, इसमें हमें पैराग्राफिंग की ज़रूरत नहीं है। नो नो, दैट इज़ नॉट टू मच, दैट इज़ ओके, दैट इज़ द नॉर्मल लेंथ फॉर 4 मार्क क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट देखते हैं हम लोग। Analyze the disadvantages to MS of using labor intensive production processes. Analyze the disadvantages to MS of using a labor intensive production process. Labor intensive production process क्या होता है यार, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर इंसानों पे, मैनुअल लेबर पे बेस करती है, नॉट द ऑटोमेटेड मशीन्स। उसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव। और इसके पॉइंट्स आप बेसिक शायद आपको पता होंगे कि लेबर इंटेंसिव के बेसिक डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि क्वालिटी वेरिएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स, और एफिशिएंसी की बात कर सकते हो कि शायद इंसान जो है वो कम एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू द मशीन्स एंड ऑल। और ये एफिशिएंसी के अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो कि यार वहाँ पे प्रोडक्शन फास्ट नहीं होती, या टाइम ज़्यादा लगता है, वेस्टेजेस या गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 24/7 काम नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप ये सब पॉइंट्स को अगर मैं एक में क्लासिफाई करें तो प्रॉबली दैट इज़ नोन एज एफिशिएंसी। तो इसको हम अलग अलग ना करें, डिसएडवांटेजेस लिखने,
तो डिसएडवांटेजेस के अंदर हमें याद रहे कि कोई प्लस में नहीं जाना। यस एग्जैक्टली, ये जो कस्टमर ये क्वालिटी का पॉइंट है, इसमें लिखेंगे कि कंसिस्टेंट क्वालिटी नहीं हो सकती, इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो एक ही तरह से काम नहीं कर सकता, उसमें प्लस माइनस ज़रूर होगा। कैन नॉट वर्क 24/7, ये भी पॉइंट एफिशिएंसी में हम डाल देंगे। और एक और वैसे पॉइंट होता है लिखना चाहें तो, डिपेंडेंस ऑन लेबर, कि वो छुट्टियां करते हैं, उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता है। और dependence on labor is another point, maybe you can write that too. But how many points do I need to write for 8 marks? For 8 marks I need to write 2 points. Yes exactly, we need to write 2 points for 8 marks. Labor intensive की definition दे देंगे सबसे पहले। Labor intensive production is when labor intensive production is when the production process is mainly based on humans, is mainly based on humans rather than automated machines, rather than automated machines। और फिर जब हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वी विल चेंज द पैराग्राफ। वन ऑफ द, क्या लिखना था, लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस of labor intensive production, one of the disadvantages of labor intensive production is the variation in the quality of products। One of the disadvantages of labor intensive production is the variation in the quality of products। Full stop के बाद क्या लिखूंगा? This means अब मुझे बताना है कि मतलब क्या मतलब, what do you mean by this point, मतलब क्यों quality? This means that the humans cannot cannot work, the humans cannot work as consistently as machines, and every person might be operating in a different way, so the shoes produced by ms so the shoes produced by ms cannot be of standardized quality। स्टैंडर्डाइज का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक ही जैसी प्रोडक्शन डेफिनेटली नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? जाहिर सी बात है, हर बंदे का दिमाग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है, कभी वो इमोशनल होता है, कभी कुछ होता है। लाइक ह्यूमंस कैन नेवर वर्क इन द सेम वे एवरी टाइम, जबकि कुछ ना कुछ चेंजेस
आ सकते हैं. The shoes produced may slightly differ may slightly differ, and this inconsistency can have a negative impact on the brand name of MS. The shoes produced may slightly differ, and this inconsistency can have a negative impact on the brand name of MS. This is because brand image, yes, brand image भी लिख सकते हैं बिल्कुल. This is because the customers may not like inconsistency in quality, especially the business customers. Especially the business customers. This is because the customers may not like inconsistency in quality, especially the business customers. And since the competitors are using, capital intensive methods, so it might become difficult to stay competitive in the market. इस तरह के कितने पॉइंट्स लिखने होते हैं मुझे? 2. अभी क्या एक आंसर कंप्लीट हुआ है हमारा? अभी तो एक पॉइंट रह गया ना हमारा. एफिशिएंसी वाला, यस. एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, डिपेंडेंस भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे. अनदर डिसएडवांटेज, पैराग्राफ चेंज ना.